of 30 students or 10 students. So if you are resuming if you already had completed the training previously, then you need, and you are basically, you want to resume the training, MOOC training, then you need to send the 10 students ka list. Otherwise, if it is a new fresh training, then you need to send us the list of 30 students. This list of 30 students or 10 students, whatever it is, you need to send us through a proper format, which was sent to you in the information mail, E-yantra information mail. So it is a registration data format. So in that format, you need to send us the list of students. Next is how to do procurement the equipment from Sanjay sir, Sanjay Kumar sir. Sir, you need to talk to the vendors out there who can. So we have a suggested list of equipment. So वो जो suggested equipment list है, उसमें से ही आपको vendors को call करना है, and वो equipments जो भी सारे mentioned है, वो आपको purchase करने हैं. वो सारे purchase होने के बाद आपका procurement process complete हो जाएगा. Please share PDF of PPT. Neeraj sir has said, please share the PPT. Okay, the lab setup progress PPT, this only, right? We will share this PPT to Atikur Rahman sir. I think he will share it with you all. Or if you need any other detail regarding the process, just mail us at support@EIFinantra. Ma'am, if any college is already got trained about yantra, uh, I didn't get the query. Vikas sir asked this. If any college already got trained about yantra. So we have 10 colleges who have completed the process, lab setup process. So yeah, Ravi Kumar sir has asked, we have set up our Yantra lab. Kindly let us know the next process. Okay, from MIT Muzaffarpur. So basically, the next step is you can ask your students to participate in Yantra competitions, and we have a like we are working on list of experiments from the lab in a box or from the suggested equipment list, which can be done by the students of your college. So once that list of experiments is completed from our end, we'll send that. Also, we'll be having a yantra symposium where we will be inviting college teachers from ELSI colleges. So there will be exhibitions of various projects. So वो जो symposium होने वाला है अप्रैल में, उसमें teachers can come from ELSI colleges. So there are various things that can should be done. So you have the procured equipment. Now what you need to do is you ask your students to come to the lab, sit in the lab, and basically get to know the equipments which are there, and start doing the projects, DIY projects. Next is from Ajit Kumar sir. Darbhanga College, our institute already paid the 50K training charges. Can you please tell the payment procedure to procure the equipment with lab in a box from Yantra? So, sir, if you have already paid 50,000 training charges, the next step will be, and if you want to get lab in a box, the next step will be to pay us 2 lakh rupees, which is the lab in a box charges. Once you pay that particular amount, you will be able to receive lab in a box, and it will have all the equipments suggested by Yantra team. So that is the next step. Email ID on which we can request for invoice. So support at the rate e-yantra.org. I'll write it in mail, the chat box also, after all the queries are resolved. And yeah, so that is the mail ID. What needs to be done to go for new offer of 2.5 lakh rupees? So for this, as I said that Ajit sir from Darbhanga also asked this question. So उन्होंने 50,000 ट्रेनिंग चार्जेस पे कर दिया है.
तो आप लोगों को 2 लाख पे करना होगा। 2 लाख पे करेंगे तो आप लोग को लैबिना बॉक्स मिल जाएगा। वो लैबिना बॉक्स इज बेसिकली द ऑल द सजेस्टेड इक्विपमेंट फ्रॉम द इक्विपमेंट लिस्ट। सो वो न्यू ऑफर अवेल करने के लिए आपको बेसिकली 2 लाख का पेमेंट टू यंत्रा करना है इफ 50,000 का पेमेंट इज डन फॉर द ट्रेनिंग। List of vendors you provide does not provide the quotation. So basically जो list of vendors हमने provide की है वो बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सारे इक्विपमेंट एक जगह से नहीं मिल पा रहे हैं, इसी वजह से लैबिना बॉक्स का प्रोसीजर चालू किया है सो दैट एक जगह से आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। बट अगेन फॉर दैट ऑल्सो वी आर नॉट द वेंडर्स, वी purchase equipment from the different vendors, the list of vendors that we send. So the process takes time, लेकिन वो process complete हो जाता है and then that's how we send the Labina box. Next is from Deeba ma'am. IIT Bombay will take an online test for study. Yeah, IIT Bombay, E-yantra team will take the online test for 30 students, selection test for 30 students. Is the lab setup and training go simultaneously? Yes, so training 2 to 3 months का ट्रेनिंग होता है, विद इन 2 मंथ्स ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, बट इफ रिक्वायर्ड हम एक्सटेंड करते हैं ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के साथ साथ कॉलेजेस को प्रोक्योरमेंट भी कंप्लीट करना पड़ता है एंड दोनों जब कंप्लीट होता है तभी लैब सेटअप प्रोसेस कंप्लीट होता है। Chandan sir from LNJ PIT Chhapra. Our institute already paid 50,000 training charges. Can you please tell the payment to procure? Yes, as I mentioned for Ajit sir also that 50,000 पेमेंट कर दिया है तो बचे 2 लाख का पेमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा टू ई यंत्रा। वंस दैट इज कंप्लीटेड लैबिना बॉक्स विल बी सेंड टू योर कॉलेज। If any college already got trained about Yantra but not procured the equipment, what is the process to get lab in a box and how much it costs? Lab in a box costs 2 lakh rupees, and if you have paid 50,000 to for the training, 2 lakh का आपको payment तभी करना पड़ेगा for lab in a box. We have to process part wise like trading charge and then equipment. No, you can do it together also. So 2.5 lakh if 50,000 का पेमेंट नहीं हुआ है तो 2.5 लाख का साथ में कर सकते हैं। From Government Engineering College Sivan, when will be result announced for selection test of 30 students which was conducted on 30 Jan 2023? So this will be announced within this week only, and we will start the MOOC for your MOOC training for your college from 27th itself. So that will be from next Monday. Training and lab setup go simultaneously. Yes, it does. List of vendors you provide does not provide the quotation. I think this was okay. I think queries are repeating. Okay. We have placed the order of Yantra lab equipment. Hopefully, it will be received within 2 weeks. I want training from IIT Bombay team. How to request for that? Sir, you just need to send us email at support@e-yantra that you want to resume the training. Once you do that, as well as you need to send the updated list of teachers and students who will be taking the training. Once you do that, we will start the training for your college. I have requested for invoice 2 weeks ago. When will so so we are working on the invoice generation. Once the I think it will take one this week as well. So once it is done, we will send the generated invoices to everyone. Uh, okay. Per college, 30 student or overall 30 student will appear the test. Per college, 30 students will appear for the test. Sumit sir. Principal sir from Madhepura. For better understanding of training material on MOOCs platform, there should be offline training for faculty members and students. We don't have offline training for students, but we do have offline training for faculty members.
So that is through the 2 day workshop that we conduct. Now you can get the details of the 2 day workshop at this link. I will be sending it in the chat section. So you will get the details of the workshop in the link I will send. Now this workshop happens only on the at the ELSI colleges. So if your college has completed the process, ELSI lab setup process, then only you can conduct the workshop at your college, and a team from E-yantra will come to your college and they will basically do the conduct the workshop. सो जो सिर्फ ईएलएसआई कॉलेजेस जिन्होंने बेसिकली प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये बेनिफिट होता है. सो उनके कॉलेज में फिर वर्कशॉप कराया जाता है. नेक्स्ट इज is it mandatory for pay 50K again fee for the students who have done? No, this is what I said. अगर आप लोग ने 50K का पेमेंट पहले कर दिया है एंड आपके टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया है, स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, तो वी डोंट यूजुअली डू इट फॉर मोर देन 2 years. अगर 2 years 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई कॉलेज में बेसिकली स्टूडेंट अपडेट करना चाहते हैं तो हम करते हैं. बट सिंस वी हैव मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर दिस, तो हम लोग आप बस हमें एक मेल कीजिए और अपडेटेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भेजिए. वंस आप हमें भेज देते हैं ये सारी चीज़ें, देन हम आपको रेज्यूम आपका जो प्रोसेस है वो रेज्यूम कर लेंगे ट्रेनिंग का. uh, how can we conduct the workshop related to yantra lab? So if you want to conduct a workshop related to yantra lab, send us a mail on support, and there are multiple colleges those are requesting for the workshop. So as per the first come first serve basis, we will have soon conduct workshop at your college. Neeraj Kumar sir has asked this. Next is Jitendra Kumar sir asked, do we need to pay 50,000 again for retraining 10 students? No, you don't need to. You just need to send us list of updated teacher and students, and you need to mail us at support. We will resume your training. Sumit Kumar sir asked for per college. Yeah, this I already answered. Per college 30 students. Uh, we have paid the fee, but our faculty are trained. Okay. How to pay 50,000 training charges? So for this, you need to we have our bank details sent through a information mail through support. So वो जो उसमें बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं, सो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा. Jitendra sir, I want list of vendors in PDF. We have already sent the list of vendors through email. Kindly check that. Uh, yeah. When will the training start? Sneha ma'am, what training are you talking about? Can you elaborate? Amit Sinha sir asked what details of students are required to be sent for training purpose. So you just mail us at support that you need to send that you are interested for retraining the students. We will send the format in which you need to send us the details. बस आप मेल कर दीजिए और हम लोग आपको बेसिकली वो फॉर्मेट भेज देंगे. वो फॉर्मेट में आपको फिर स्टूडेंट का डिटेल भेजना होगा. हाँ, there's a question that are the faculties replaced? Yes, you can replace them. That is not a problem. If we are replacing students, we can surely go for replacing faculties as well. Dipiksha ma'am from GEC West Chapran asked, which BTech year students will be suitable for Yantra online course? Any year student from first year to final year, we have trained all the year students till now, so any year students can complete the course. Chandan Kumar sir has asked, can we get specification of all the equipment in Yantra lab and list of vendors? Yes, Chandan sir, you had asked this on support as well.
So for the specification, we are, as I said, we are working on that. I know it is taking a little time, but we usually don't get anything related to specification of equipment. We have already listed the specification or the like it's basic information that is there. But okay, we'll say we are, as I said, we are working on the specification of equipment and it will be sent to you soon. Uh, shall we process without invoice? Yes, you can do that. That I think won't be a problem. But I will talk to one of the member who is from the office team from the E-yantra, and he can reply on that. Is there any possibility for yantra MOOCs for large number of students? Yeah. So very nice question by Sadiq sir. So if your college is completed or are in process of yantra lab establishment, we have something called as yantra subscription model. Now this yantra subscription model is for, I would like everyone to pay attention to this point. So this E-yantra subscription model is for the colleges who have completed the lab setup process and basically want to train large number of students. So up to 100 we consider, and more than that also. So for any particular MOOC, we have a amount of training charges. So you just like if you want to do something like this, train large number of students in the yantra MOOCs, just send us email on support@eHappinYantra. We have a subscription model का तीन types of model, basic, advanced and intermediate. So उसके बारे में जो भी details होंगे वो हम आपको भेज देंगे, and वो details को basically आप overview कर सकते हैं, and जो भी issues है वो आप हमसे पूछ सकते हैं. What are the branches eligible for this course? All the branches are eligible for this course. We have had students from mechanical branch as well for the course. So there's no restriction on that. Uh, can you extend the training to more than 10 students? No. So if you want to go train more than 10 students, you need to go for subscription model. So, charges for subscription model will be different. But for training of basic training, we only allowed 4 teachers and 10 students. Which branches are eligible? All branches are eligible. Mostly, we recommend students who know basic know-how of the programming languages. Programming language should take the course. Like it is beneficial to them. ECE, CSE, IT. If these branch takes the course, they are like more. They it is easier for them to understand things. GP Dehri, we have paid 50K 2 year ago, but not getting the training at that time. We have procured the material also, but lagging in training. We have contacted your team through email also. Okay, sir. I will check this right away. I'll add your name here. So, Dehri, uh, you resuming of training. I will check with the team and resume your training as soon as possible. What are the initial process for training of faculties and students? Kindly write us email that you want to know the process of training of faculties and students. I just explained it that you need to send us nominate teachers and students. Once you do that, we will send an email, and we will do the selection test. We enroll the teachers and students in the MOOC. Side by side, the college procures the equipment. Once both of these things are done, then the lab setup process is completed. Um, will training started after lab setup? Uh, no, the training happens before lab setup. There is training. There is lab procurement, equipment procurement process, which goes side by side. Once the training as well as procurement process is done, then and only then lab is established.
No, from GP Theory, sir, you don't need to pay again. We will consider resume the training with the paid amount which was paid 2 years ago. At what stage will be assumed to be process of lab establishment process? Uh, at what stage will be assumed to be in process of lab establishment process? So basically, if you complete everything, your lab will be inaugurated. I need to check what stage are you in. So just send an email at support to know the stage where you have completed. I just wanted to know if you, MD Nadir sir, if you have completed the procurement and what is the status of training. Do you want to resume the training? If you want to do that, we'll resume the training. And once the training as well as okay, so training you haven't done, so you need to train the students. Nominate four teachers and 30 students. We'll select 10 students. जो सिलेक्शन हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स का उनको 10 स्टूडेंट्स और 4 टीचर्स को हम ट्रेनिंग में कन्वर्ट करेंगे ओके तो हम ओके सो ये जो लिस्ट आपने भेज दी है इनका सिलेक्शन टेस्ट अगर हो गया है तो हम लोग training process is online and MD Nadir sir can you mail me at support then I will check uh, so if possible contact number of E-yantra representative I have shared the contact detail of okay just a second. This is the workshop form that where you can get the details of current workshop which are happening. Contact details के लिए information is here. तो E-yantra का contact details are here. Workshop form का details are here. And if you want to know about the process and format of various things that I just asked, like registration data format and everything, just fill this form. I am sending a form. ELSI. If you fill the form that I just sent, registration know more about ELSI. अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अभी के मॉडल के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और सारे जो आपको डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है लैब सेटअप प्रोसेस में वो भी आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद मिल जाएगा तो ये फॉर्म फिल कर दीजिए एंड यू विल गेट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स. We have purchased the equipment and also completed online MOOC training, but lab is not installed. So you need to just send an email to support saying that you have completed the purchase of the equipment and completed the online MOOC training. And by mid March, we'll have lab inauguration and we'll inaugurate your lab. So this is for all the other colleges also. अगर आप मार्च के पहले तक अपना जो लैब सेटअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग आप लोग का एक बार हो ही चुका है अगर आप सिर्फ प्रोक्योरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रोक्योरमेंट ही एक चीज़ है जो बाकी रहती है तो अगर ये दोनों चीज़ें आप मार्च के पहले तक मिड मार्च के पहले तक कंप्लीट करते हैं तो हम आप लोग के कॉलेज में सबके कॉलेज में मिड मार्च को लैब इनॉग्रेशन कंप्लीट करवा देंगे एंड सबके कॉलेज में लैब स्टैब्लिश हो जाएगा तो दिस इज ए पॉइंट दैट शुड बी नोटेड दैट ऑल द कॉलेजेस if they complete lab procurement equipment procurement within mid March they can have their lab established by March itself.
Can we initiate procurement before training? Yes, you can do that. That is not a problem. So as I said, training and procurement goes side by side. So it's not a problem if you start one thing before the other. I think all the questions from chat are answered. सारे क्वेश्चंस चैट में जो पूछे गए थे वो आंसर कर दिए गए। और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो फील फ्री टू मेल अस एट support@e-yantra। मैंने डिटेल्स भेज दी है। एंड मैंने जो एक दो फॉर्म भेजे हैं, एक फॉर्म में आप वर्कशॉप जो जो होने वाले हैं थ्रू आउट इंडिया, वो आप लिस्ट ऑफ वर्कशॉप देख सकते हैं। तो आपके कॉलेज से 2 से 4 टीचर्स आके वो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। सेकंड चीज, जो फॉर्म मैंने भेजा है नो मोर अबाउट ईएलएसआई, वो फॉर्म फिल करने के बाद आप बेसिकली यंत्रा प्रोसेस डिटेल में जान सकते हैं। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सेंड करने हैं हम लोगों को, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ये मेल बेसिकली ये जो फॉर्म है वो फिल करने के बाद आपको मेल पे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। सो या दैट इज ऑल फ्रॉम यंत्रा। डायरेक्टर सर, या I would like to thank all the teachers. You stayed for this whole time, listened patiently, and if you have any doubts, kindly mail us at support also. And I would also like to thank director sir कि आपने ये वेबिनार अटेंड करवाया। आई थिंक ये वेबिनार के थ्रू काफ़ी कॉलेजेस को हेल्प हो गया होगा। And they are at ease now, and with the lab procurement also, a lab in a box अगर purchase करना है तो that will be a one step easier for you to procure the equipment. So that is all from Yantra. Thank you everyone. की टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आपने हमारे कॉलेजेस का जो भी क्वेरीज थी उसको आपने निराकरण किया, और हमारे जो भी फैकल्टीज हों, भली प्रिंसिपल्स हों, उनको भी आपने बताया कि किस प्रकार से अपने कॉलेजेस में ई यंत्रा को सेटअप करेंगे और उसका लाभ हमारे बच्चे हैं वो लोग उसको उठा सकेंगे और हमारे फैकल्टीज भी उसको उठा सकेंगे। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भविष्य में फिर से एक रिफ्रेशर इसका, जैसे आज हम लोगों ने कराया, अगर और भी कुछ डाउट्स होंगे तो उसके लिए हम लोग फिर से आयोजित कर सकते हैं भविष्य में। देखता जी सर। कॉलेजेस का हम लोग फीडबैक देखेंगे कि क्या उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, इफ दे आर एबल टू फुलफिल दैट। और आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं तो उसमें भी सभी कॉलेजेस से भी अनुरोध है कि आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल परख की प्लस ई यंत्रा की भी इसमें चैट बॉक्स में भी डाली है, प्लस अभी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल जी ने ग्रुप पे भी डाल दी है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इनसे रिलेटेड आप लोग उसमें संपर्क करें। परंतु मेरा मेन यही एम है कि जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसके लिए आपको 2020 में आवंटन दिया जा चुका है, तो आप लोग सदुपयोग कराएं। अपने यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं या फैकल्टीज हैं जो इनका यूज करना चाहें वो लोग यूज कर सकें। और परख पोर्टल का विशेष रूप से, क्योंकि अब उसके थ्रू ही हम लोग समर्थ का भी एक चल रहा है हमारा यहाँ पर पॉलिटेक्निक्स में, जिसको डिग्री में भी इम्प्लीमेंट कर दिया है हम लोगों ने, और परख हमारा असेसमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारे अब धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोगों के यहाँ पर रहेगा और हमारे बच्चों को इसका विशेष रूप से लाभ होगा। तो मैं पुनः ई यंत्रा की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे विभाग के लिए समय निकाला। तो इसके बाद में अब एक चीज़ और थी हम लोगों की, जिसमें सभी प्राचार्य हमारे जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने आपको स्टेम आउटरीच कमेटी एक बनानी थी। उसके लिए हम लोगों ने आपको एक लेटर भेजा था कि जो भी लोग भी इच्छुक हों, तो उसमें से भी कुछ जगह से हमें आया है, तो उसका आप लोग जल्द से जल्द अगर कोई और भी इच्छुक हो तो उसको भेज दें, नहीं तो हम लोग मानेंगे कि आप लोगों को कुछ नहीं कहना है और जितने रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए तो उसी में फिर हम लोग निर्णय लेंगे। तो आप लोगों को जो स्टेम आउटरीच कमेटी जो लोकली आपके सेक्रेटरी सर का निर्देश था कि लोकली आपके जिले में जो भी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उन सब में भ्रमण करके या उनमें किस प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन को हम ताकि हमारे यहाँ पर आ जाए।
दूसरा चीज़ था कि जो हम लोगों ने दिया था कि जो 5 ब्रांचेस 6 ब्रांचेस हमारे यहाँ पर हैं, सीएस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इसकी जो लैब सेटअप करनी है उसका एक मॉडल हम लोगों को बनाना है, मॉडल स्पेसिफिकेशंस। उसके लिए भी हम लोगों ने आप लोगों से नाम आमंत्रित किए थे, तो उसका भी जो रिस्पॉन्सेज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अगर इसके बाद भी कोई फैकल्टीज अगर उसमें भरना चाहें आपका, तो उसको भर सकता है, ताकि उसके ऊपर भी हम लोग निर्णय लें। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग जल्द से जल्द अपने यहाँ पर करवा लें, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई बाद में जो चाह रहा हो वो छूट जाए। तो इसलिए हम लोग आपसे चाह रहे हैं कि आप लोग फिर से इसका नीचे लेवल पे भी अपने फैकल्टीज़ में इसके बारे में बता दें, ताकि जो भी इच्छुक हो वो कम से कम छूटे ना वो हम लोगों के उसमें। तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे। फिर अगला चीज़ हम लोगों का था कंसल्टेंसी पॉलिसी, जो हम लोग बनाएंगे, या जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हम लोग चालू करना चाह रहे हैं, इसको लेकर के जो एक समिति बनी थी 15 लोगों की, उसमें से अगर वो लोग रहें हमारे, बाकी लोग अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं डिस्कनेक्ट कर लें, नहीं तो अगर बाकी लोग भी अगर कुछ इसमें फीडबैक अगर करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसका ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का कंसल्टेंसी पॉलिसी से रिलेटेड। तो उसमें अगर कोई भी कुछ भी अगर एड ऑन करना चाहता है, ग्रुप पे भी कुछ फीडबैक्स आए थे, परंतु सब लोगों ने उसमें अपना अपना मत नहीं दिया था। तो उसमें लेकर भी एक बार यशवंत जी भी हमारे इसके अंदर ज्वाइन है, तो उनको बता दूं कि वो ब्रीफ बता दें इसके बारे में आप, ताकि सब लोग उसको सिंथेसाइज करें। जब मैडम हो तो मैडम बता दें इसमें। सब उनको देना नहीं तो अपना अनम्यूट कर दीजिए उनको, यशवंत को, आईटी मैनेजर। किराए हेतु, किराए प्रथम चरण में किराए हेतु मैटलैब एवं प्रोटियस सॉफ्टवेयर का संबंधित प्रतिरोध प्रस्तुतिकरण, ये तो सही है। कार्यालय कक्ष में हाइब्रिड माध्यम, हाइब्रिड में पैकेट में लिख दूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑफ, फिर ठीक हो जाएगा। प्रतिनिधि करवा दें, करवा लीजिए। यशवंत जी ज्वाइन हुए हैं, अनम्यूट कर दीजिए उनको, आईटी मैनेजर। यस सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर। हाँ जी, एक मिनट से देखिए जरा सही है, इसको लीजिए। स्क्रीन शेयर हुआ है ना? हाँ जी, पता है किसका बता रहे थे। हाँ, इसको जैसे कुछ उपस्थापन पदाधिकारी नहीं है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? गुड मॉर्निंग, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिखा लेकिन वीडियो ही पत्र को लगा करके भेजना पड़ता है कि जब वहाँ से आ जाएगा, अगर उसका जवाब संतुष्टिपूर्ण है तब होगा। हाँ, नियम वही है। आरोप पत्रों को अभी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, फुल स्क्रीन इसको कर दीजिए। हेलो, हाँ दिख रहा है आपका, फुल स्क्रीन कर दीजिए। जवाब देना, उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा आपने अगर 2 मिनट बात करते हैं। ये दूसरा इसमें मेरे तरफ से है, सचिव के तरफ से है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हम लोगों ने कंसल्टेंसी पॉलिसी शेयर की थी, जो कंसल्टेंसी पॉलिसी की ग्रुप बनी हुई है। उसमें एक्चुअली अनंत सर के साथ मेरा कुछ डिस्कशन हुआ है, उनका फीडबैक हम लोगों ने इंकॉर्पोरेट भी किया है। एक दो लोगों से और इनफॉर्मल बातचीत हुई थी, जिनका फीडबैक हम लोगों ने ट्राई किया इनकॉर्पोरेट करने का। बट जो आज का डिस्कशन पॉइंट होगा वो बेसिकली 4 मुद्दों पे होगा। हेलो सर, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग अपना हेलो आप ऑडिबल है, आप बोलिए। अनम्यूट नहीं हुए होंगे लोग, इसलिए नहीं जवाब दे पा रहे।
सिर्फ डायरेक्टर सर का इसमें है। तो दवा है। अच्छा, ठीक है। तो आपसे सर, जो भी ग्रुप में हमारे मेंबर्स थे, उनसे इन 4 मुद्दों पे फीडबैक चाहिए था हम लोगों को। पहली ये चीज कि हम लोग किस तरह की कंसल्टेंसी कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो पहला है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये हम करेंगे ही करेंगे, ये इससे शायद सभी लोग अग्री होंगे। टेस्टिंग की सर्विसेज हमारे इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। अब उसमें जो टेस्टिंग के जो पार्ट हैं कि हम लोग कंक्रीट की टेस्टिंग करेंगे, सॉइल की टेस्टिंग करेंगे, प्रेशर गेज करेंगे, केमिकल आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इवैल्यूएशन ऑफ अननोन स्पीसीज भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं या जो क्राइटेरियाज हैं, ये किसी ना किसी डॉक्यूमेंट से रेफर किया गया है जो इंटरनेट पे अवेलेबल था कि टेस्टिंग में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा, कि सर्विसेज हम किस तरीके की दे सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में यहाँ कि सर्विसेज हम किस किस तरह के प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है। और थर्ड, जो इम्पोर्टेंट था, एक बेहतरीन आइडिया था जो आनंद सर की तरफ से आया था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कि हम लोग क्या अपने इंस्टीट्यूशंस को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी देखते हैं कि जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग देयर ओन कॉर्पस। तो ये 3 मुख्य मुद्दे हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज के, कि हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो किन किन मुद्दों पे करेंगे, सर्विसेज देंगे तो किन किन चीजों पे देंगे, और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या हम लोग इसको भी प्रमोट कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। इसमें आपसे फीडबैक चाहिए था। जो ऐसे तो अच्छा रहता कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करते, बट अभी जो स्थिति है उसमें हम लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आपको। तो मैं अपने स्क्रीन में जो चीजें हैं मैं उसको शेयर कर रहा हूं। जो दूसरा फीडबैक आप लोगों से एक्सपेक्टेड था कि जो बजटरी नॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसल्टेंसी फंड हम लोगों ने अपने पॉलिसी में प्रपोज किया है, उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कहा है कि 20% इंस्टीट्यूट का शेयर रहेगा और 80% जो उसका उस फंड का जो पैसा होगा वो जो कंसर्न कंसल्टेंट्स होंगे या रिसर्च के जो पूरी टीम होगी, ये उनको जाएगा। ये हम लोगों ने प्रपोज किया था 20-80 का रेशियो। तो इस पर आप लोगों से यशवंत जी, एक सेकंड आप होल्ड करेंगे। यशवंत जी, जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी एक कंसल्टेंसी सर्विस के लिए जो पॉलिसी डिसाइड करने के लिए कमेटी बनी हुई है, मैं उन सर लोग का नाम बोल रही हूँ, वो लोग रहेंगे, बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। चंद्रशेखर सर है, आनंद सर है, कुमार सुरेंद्र सर है, राजन सरकार सर है, जयशंकर प्रसाद केसिंग सर, सूर्यकांत सिंह, नीरज कुमार प्राचार्य किशनगंज के सर है, आत्माराम गुप्ता, भगवान श्री राम, ठाकुर संजय कुमार, अनिल कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, ये लोग रहेंगे। बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। यशवंत जी, आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। तो बजटरी नॉर्म्स जो हम लोगों ने रखा है उसमें जैसा मैं बता रहा था कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फंड होगा, जो कमाई होगी हमारी, आप इससे ये मतलब जो ओवरऑल क्लाइंट से जो मिलेगा और जो टैक्स और अदर एक्सपेंडिचर के बाद जो कमाई होती है वो जेड है हमारा। तो उस जेड का 20% जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोगों ने प्रपोज किया है और 80% प्रपोज किया है जो रिसर्च की टीम होगी और उसमें इन्वॉल्व जो रिसोर्स पर्सन होंगे उनके लिए। इसके पीछे आइडिया सिर्फ इतना ही था कि रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी कभी इंस्टीट्यूशन बेस्ड नहीं होके इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं। वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है जो वो रिसर्च के प्रोजेक्ट लेके आते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसमें जो रेशियो है इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन का, उसको 20-80 रखा है। उसमें आपके सजेशंस चाहिए थे। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट था कि टेस्टिंग का जो कंसल्टेंसी होगी, उसमें हम लोगों ने 2 तरह का प्रपोज किया था। ये भी एक डॉक्यूमेंट से ही रेफर किया गया है कि अगर डेटा का इंटरप्रिटेशन के डिटेल डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ अगर कोई कंसल्टेंसी होती है टेस्टिंग,
तो उसमें जो रेशियो है इंस्टीट्यूशन का और इंडिविजुअल का वो 40-60 का होगा। यानी टेस्टिंग में अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की एक्टिविटी शामिल होगी और उसमें डिटेल रिपोर्ट बनना होगा, तो जो रिसोर्स पर्सन या जो बंदा या जो फैकल्टी उसमें शामिल होंगे उनको 60% जाएगा और 40% इंस्टीट्यूट का रहेगा। अगर इसमें सिर्फ विदाउट डेटा इंटरप्रिटेशन कोई टेस्टिंग का रिपोर्ट देना होगा, इसमें डिटेल इंटरप्रिटेशन के साथ रिपोर्ट नहीं जानी होगी, उसमें इंस्टीट्यूट का जो शेयर होगा वो 70% होगा और जो कंसर्न लोग उसमें शामिल होंगे उनका 30% शेयर रहेगा। ये हम लोगों ने प्रपोज किया था। जो सर्विस कैटेगरी है, जो सर्विसेज की कैटेगरी है, आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो प्रपोज किया है उसमें सर्विसेज में एक प्रपोजल ये भी है कि कोई क्लाइंट अगर हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उस तरह की सर्विसेज हम देना चाहेंगे। इस पे भी आपका मंतव्य चाहिए होगा। और दूसरा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ट्रेनिंग के पर्पज से हो, ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो चीजें हो रही हो या ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग या ई सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज देनी है तो हम लोग उसके लिए जो सर्विसेज उसके लिए जो कैटेगरी बनाया हुआ है और फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 40-60 का है। यानी 40% जो होगा वो इंस्टीट्यूट का होगा और 60% जो होगा वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनको मिलेगा। इस पे आपका फीडबैक चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में हम लोग ओवरऑल चूंकि इंस्टीट्यूट के ही ज्यादातर रिसोर्सेज शामिल होंगे इसलिए इंस्टीट्यूट के शेयर को 70% रखा है और 30% रखा है जो इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए। तो ये ओवरऑल जो बजटरी नॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूशन है कंसल्टेंसी फंड से जो अर्निंग होगी हमारी उसके लिए हम लोगों ने अपने पॉलिसी में प्रपोज किया है जिसमें आपका इनपुट और फीडबैक चाहिए। जो थर्ड पार्ट था कि इंस्टीट्यूट को मिल जाएगा उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड में कितना परसेंटेज होगा और प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंड में कितना परसेंटेज इस्तेमाल होगा। ये हम लोगों ने 70-30 का रेशियो रखा है अपने पॉलिसी में। इस पर आपका इनपुट चाहिए होगा। और फोर्थ जो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है उसका इस्तेमाल इंस्टीट्यूट कैसे करेगा और किन कार्यों में करेगा उसका एक डिटेल हम लोगों ने प्रपोज किया है अपने पॉलिसी में। इन चीजों पे आपका इनपुट चाहिए। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट के, इसलिए हम लोग इन चारों को ही रख रहे हैं। इसके अलावा भी पॉलिसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें जनरल गाइडलाइंस है, ट्राइबल की पॉलिसी है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्राइवेसी से रिलेटेड भी चीजें होंगी तो उसमें भी आप दे सकते हैं इनपुट अपना। बट मेजर ये 4 चीजें हैं जहां पे आप सबों का इनपुट रिक्वायर्ड है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने से पहले। बाकी अभी जस्ट एक सर का आया हुआ है कि कुछ जो फॉर्मेट्स हैं वो डेवलप करके हम लोग उसमें डाल देंगे। वेल टेकन, हम लोग एक पर जब पॉलिसी फाइनल कर लेंगे तो उसमें सारे फॉर्मेट्स किस तरह के होंगे, क्या क्या चीजें जानी होंगी वो एनेक्सर में हम लोग उसको डाल देंगे। थैंक यू। मेरे साइड से इतना ही है। हेलो, थैंक यू यशवंत जी। अभी सर यशवंत जी ने सारा ब्रीफ कर दिया है कि उनको एग्जैक्टली क्या क्या आप लोग की तरफ से फीडबैक चाहिए। आप लोग जो भी फीडबैक देना चाहेंगे अभी देना है तो अभी दे सकते हैं एंड बाकी एक बार डॉक्यूमेंट करके आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दिया हुआ है, नहीं तो आप मेरे मेल आईडी पे भी कर सकते हैं prabha@dst@gmail.com पे। एक रिक्वेस्ट और है। यस, एम आई ऑडियो? जो लोग भी हाँ आवाज आ रही है आपको? Yes, I want to add something in this proposal. Actually, I have gone through the made guideline. First of all, thanks to all the members who have made the guideline. It is very nicely drafted. So thanks to everyone who have worked hard for this. And I want to add some point here. That research and consultancy, consultancy generally we are doing some testing, and beside testing one more that component is there,
that sometime government do the secret analysis for the testing report if someone have some submitted. So, and that is called vetting. So besides that testing, we can add vetting also. So in the consultancy, in vetting, someone have done already the finished the consultancy job, but if that is very much required, sometimes some that things can be serious for the public. So it will be again verified from some government institution. So after doing the testing, we can do the vetting analysis also, in which generally we are going through the report submitted by the NEPI. So that is vetting we can add here. Also, that some forms I have given in the WhatsApp Okay, thank you so much. group. Anything else? Uh, yes. So that form also we can finalize. For example, I have given. So and before doing that testing or doing the consultancy work, which type of consultancy specialization is there in which college? Also, we can work on that so that it will depend upon two things. One is the lab facility, and other is the faculty, concerned faculty available there. So, like if lab is only there and certification is not there, like some calibration is required for laboratory or NABL certification. For good that for maintaining the quality, we should see the calibration and NABL report. Some that certification of the lab should be there. So these are the things. And also one more important thing is there. One more motto I hope as much as I have understand, and that we have to increase the revenue. We have to look for the revenue of the institute so that we can make it sustainable. So one that professional body is there, that is Institution of Engineers. So Institution of Engineers that they are generally some diploma students are doing engineering through AMI there. So AMI students have to do that their practicals in NITs and IITs. So that can be reframed. Uh, we can offer them that laboratory practicals, and Institution of Engineers AMI they are paying for that. This practice I was doing it at, earlier in my institute at NIT Kurukshetra. So these are the add-on which I want to give from my side, and which can be openly discussed with the experienced faculty members. Thank you. ओके सर, और किन्हीं को कुछ ऐड करना हो इसमें? Good afternoon, sir. My name is Vishal Kumar Chaudhary. I am assistant professor in GEC Khagaria. Uh, I was inquiring about what about the project management related. Suppose I have already worked for 6 years in IRCON in a government PSU. So there is some delay analysis and also regarding cost management or change management. So these services comes under 30% category. I think so. In which we are not using any lab equipment. We are only using our like without any lab equipment, and we are making reports and giving suggestion to the government bodies. Yes, come again. Sir, related to project manage, suppose we are doing delay analysis and like change management. So these kind of services, if we provide, so these comes under like 30% for institute and 70% for uh, 74% for the person involved. So it's like that. It comes under service category.
this type of consultancy? We have proposed only 4 categories of under consultancy services. There is no project management as such. Okay. So I hope these. What do you mean by project management? Whether what type of project management an institution can do under this I'm consultancy umbrella? so What some kind of? there is a delay analysis. Delay analysis is there. Suppose some projects get delayed, then we have to report the delays, like with the help of Primavera and Microsoft Project Management, we can do the delay analysis. Then there is a change in scope management, or then there will be arbitrations. Then in the arbitration we can submit our reports, or we can make reports. So these kind of expertise also can be used. Okay, okay. So if other members are agreed, we can take this point. If institute have certain capacity, individual and institutional capacity, we can take this these type of activities under our consultancy services. Yes, sir. Okay, thank you, sir.